ओके, हम स्टार्ट करें जी। शुरू करें सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। First of all, I am very thankful to all of you for sparing time, and I'm also thankful Mrs. Eko for organizing this program, and especially I'm thankful to Dr. Zishan who has arranged this program, because this setup has 1,000 participant capacity. So therefore, we are really thankful to all the organizers. And as you know, that about the can you see the slides? नहीं सर, आपने शेयर नहीं किया अभी। अच्छा, जब तक ये शेयर ना हो हम एक दुआ कर लेते हैं कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला इस कोविड के मसले से, हमारा मुल्क, हमारा शहर और पूरी दुनिया, उसके साथ हमारे जिना हॉस्पिटल को अल्लाह ताला, यहाँ के काम करने वालों को अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दे, और खुदा करे कि ये जो है, ये जो कोविड मुसीबत आई थी, इसकी वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम दुनिया में सफ़े अव्वल के कौमों में शामिल हों। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और रमज़ान के बाबरकत दिन हैं, तो हम सबको दुआ मांगनी चाहिए, और ख़ासतौर पर मरीज़ों की दुआओं में वीटो पावर है, उनसे ज़रूर मांगनी चाहिए। मैं तो अक्सर मरीज़ों को कहता हूँ, उम्मीद है कि इस मसले से हम खुश उसलूबी से निकल आएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाउ कैन यू सी दी स्लाइड्स? नहीं सर, अभी शेयर नहीं है। ओके, बस ये अभी 1 मिनट में हो जाता। सर, एक बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, एक मैं आई कैन सी द चैट्स। इसके अंदर इज देयर समवन फ्रॉम सोसाइटी लुकिंग आफ्टर द फैकल्टी ऑफ द सोसाइटी? क्योंकि कुछ लोग माइक मांग रहे हैं। माइक सिर्फ आपको परमिशन होगी, आप जिसको कहेंगे अनम्यूट करेंगे, या कोई सोसाइटी में कोई आपका जो सीनियर हो, क्योंकि अभी टॉक के दौरान तो ज़ाहिर है अनम्यूट कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये कि टॉक के बाद किसको अनम्यूट करना है, बिकॉज एज ए जो है ना रूटीन, वी कीप एवरीबडी म्यूटेड ड्यूरिंग the meeting and after the meeting unless we unmute them. ये जो right of getting unmute, वो unlimited audience होते हैं तो हम नहीं देते हैं। तो there has to be someone who would look after कि किसका माइक अनम्यूट करना है और कब करना है, क्योंकि हमारे लोग जानते नहीं होंगे, ये उजैर और किरण क्योंकि उन लोगों को जानते नहीं है, तो they may not be able to identify them कि अगर कोई सीनियर फैकल्टी माइक मांग रही है तो हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे दो, वैसे तो वो पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं उसको तो हमने रखा ही है, लेकिन साथ साथ हमने ब्रिगेडियर रऊफ साहब को रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी टीम के साथ आए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो कि यूके में या अमेरिका में प्रोफेसर के ओहदों पे हैं। तो प्रोफेसर तैयब ताहिर, हु इज़ एक्चुअली दी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दी कंसल्टेशन लाइजॉन साइकेट्री, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उससे रिक्वेस्ट की है कि वो भी इसको शामिल होकर अपने ख्यालात से इजहार करें। एंड एट द सेम टाइम वन ऑफ माई स्टूडेंट डॉक्टर आबिद मलिक, हु हैज़ डन 5 डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड, जिसमें एक तो ये साइकोसोमेटिक पे, एक दिन उनके सामने मैंने कहा कि काश मेरा बेटा साइकेट्रिस्ट होता और साइकोसोमेटिक में मैं करता, तो उसने कहा मैं करूँगा, उसने कर लिया। तो ही हैज़ डन 5 डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड, ही विल ज्वाइन। उसने कहा वहाँ रात 3 बज रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उठूं और आप लोगों में शामिल हूं। लेकिन एनी हाउ, आज की हमारी पहली नेम समवन हु वुड लुक आफ्टर दीस पीपल, उसको हम को होस्ट कर देते हैं, हु इज नॉट विद यू राइट नाउ, जो दूसरे रूम में कहीं पे हैं, ताकि वो को होस्ट कर देंगे। तो जब उनको बोलने का आप बोलेंगे तो वो अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को। बाकी है कि बिकॉज ऑडियंस ज्यादा होते हैं तो सबको अनम्यूट नहीं कर पाते हैं हम, जो है। अच्छा, तो उसका क्या तरीका कार हो? सर कोई नॉमिनेट कर दें, कोई भी आपकी तरफ से जो इस वक्त अभी मौजूद हैं उनमें से, कि जिसको हम ये को-होस्ट कर दें। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि जो आपके फैकल्टी है, उनके कमेंट्स जिस टाइम पे लेने होंगे तो उनको अनम्यूट करके उनको माइक देगा वो। अच्छा, अभी हम ये चाहते हैं कि अगर प्रोफेसर मुख्तार जो है, सर असद निजामी साहब का भी अभी चैट के अंदर मैसेज आया हुआ कि जी हमें अनम्यूट कर दें, क्योंकि वो अब हम जानते नहीं है इन लोगों को। तो देयर हैज टू बी फ्रॉम द सोसाइटी, जिसको हम को-होस्ट कर दें। आप नॉमिनेट कर लें, जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट आ रही होगी ना इनमें से, तो ये उजैर पहले उनको। तो प्रोफेसर मुख्तार जो पेशावर में बैठे हैं, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उससे दरख्वास्त करता हूं कि वो इस चीज को संभालें। उजैर प्लीज मुख्तार साहब को आप को-होस्ट कर दें, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी माइक देना और माइक लेना, ताकि ये जो है
किसी को सर क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है एक्चुअली उनको जानता नहीं है किसी को, तो ये मुख्तार साहब की फिर होगी कि वो अगर कोई भी सोसाइटी के मेंबर कोई बात करना चाह रहे हैं तो वो उनको अनम्यूट करके आपको थ्रू कर देंगे। अच्छा, वो चैट प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं। मुख्तार साहब आप प्लीज हैंड रेज करेंगे ताकि आप आइडेंटिफाई हो जाएं जल्दी। अगर नहीं तो प्रोफेसर गुलाम रसूल जो है, गुलाम रसूल है, एक मिनट, प्रोफेसर गुलाम रसूल साहब। हाँ, गुलाम रसूल साहब हैं जी, इनको को होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और ठीक है। इसके साथ साथ असद निजामी को भी कर सकते हैं अगर कोई नहीं है तो। असद निजामी साहब माइक मांग रहे थे अभी। असद निजामी साहब ने की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मुझे आप माइक अनम्यूट कर दें मेरा। असद निजामी साहब को भी आप को होस्ट कर दें। ठीक है। जी सर, असद निजामी साहब भी हो गए हैं। जी ठीक है, ठीक हो गया। नाउ ये असद निजामी साहब और गुलाम रसूल साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आप चैट फॉलो कर लीजिएगा सोसाइटी के जो मेंबरान हैं आपके उनको, और जहां जरूरत हो उनके माइक को आप अनम्यूट करके अफरीदी साहब के थ्रू करा दीजिएगा। सर नाउ यू सर फ्लोर इज विद यू अफरीदी साहब, यू कैन कंटिन्यू विद योर टॉक नाउ। ओके, Bismillahirrahmanirrahim. We have started this program with the intention that due to COVID problem, the teaching training has ceased actually. So we tried with the help of the ECHO and also the Dr. Zishan that we should start this activity, and this will be regular activities. Every week we will have some topic, and this will not be just a talk. Let me clarify that it should not be a formal talk, but informal discussion, so that we can learn from each other experiences, because the panel of experts are really the stalwart of psychiatry, and people are listening here. I can see many faces, so this should be informal talk. And the method is that first we want that what are the objective of this talk, and then pre-assessment BCQ has been circulated. It has been circulated because this will be credit hours will be given, and then we will talk about 25 minutes for the lecture, but this should not be a formal lecture, and that will be followed by a skill development OSCE type, या जिसको हम कह सकते हैं कि so that we can develop what skill is required if you are working in consultation liaison psychiatry. So that skill in the start we have made, we will display, but next time the skill will be done in each center, and that will be कि 3 लोग होंगे, 4 लोगों का एक ग्रुप होगा जिसमें एक पेशेंट बनेगा, एक जो है वो कैंडिडेट बनेगा, एक रिकॉर्डिंग करेगा और सुपरवाइजर उसको देखेगा, और जिसकी अच्छी वीडियो क्लिप होगी उसको हम जो है अपने वेबसाइट पे पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के वेबसाइट पे डाल देंगे। तो वो स्किल हमने कोई 150 के करीब बनाई हैं, वो जो मेमोरी ओरिएंटेड नहीं है बल्कि स्किल ओरिएंटेड है। और आखिर में इसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट के साथ होगा, और फिर उसके बाद में हम पोस्ट असेसमेंट और करेंगे, और डिजिटल फीडबैक होगा। जो डिजिटल फीडबैक देगा उसको जो है हम क्रेडिट आवर्स देंगे। तो if you look at the background of this topic, there is huge literature on the association between medically unexplained symptom and psychopathology. In primary care, 20% of the patient who approach to GP, they are not actually having the diagnosable entity, diagnostic entity. And the proportion is very high among developing countries. And this lead to 33% of the cases persist and leading to distress and disability. Now, I was wondering that how the psychosomatic, what is the contribution of Muslim scientists? So Ibn Sina during Abbasian time was the first to describe the effect of psychic on the body. Previously, the body-mind relationship was not known, and Socrates in 450 BC said that the fault of modern physician would be that he would separate the body from the soul. Now here, here you can see that Ibn Sina was very active in this all aspect. He has written 100 books, you can imagine. One is the canon of medicine, is huge.
And for 300 years, that book was among the curriculum of the MBBS. So he first described this case that there was a person who could not marry a girl who he loved, and later on, जब उसके हाथ पे टच किया करते थे, उसकी जगह का तस्करा होता था, तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी. That means कि उन्होंने सोचा कि it is something to do with the emotion. तो उन्होंने ये महसूस किया कि the psychological problem can represent the bodily symptom. Or but there is a two term was coined. One was psychosomatic, another was somatopsychic. Somatopsychic, when soma is body, psychic means mind. When bodily symptoms are converted and represented in emotional symptom, this is called somatopsychic. While the reverse occur when there is psychological problem and represented in the idiom of bodily symptom, that was called psychosomatic medicine. But this is a gray terminology, but later on, despite the fact that there is a diplomat American board occur in the psychosomatic medicine, but the term is now obsolete. But as you know that the body-mind connection is there, and the general medicine, psychiatry, and other systems are interlinked. So if you look at this convergent disorder, functional disorder, psychogenic illness, factitious disorder, Munchausen syndrome, these and psychogenic pain, psychogenic fatigue, psychogenic seizure, these all many, and when these patients go to the physician or colleagues or cardiologists, they say everything is in your mind, and they say you don't have any disease. Then we give contradictory message that you don't have any disease, but how you are prescribing a medication then? So therefore, that really require some skill. If you look at this slide, that the gastroenterology was on the top. Previously, gastroenterology, 60% of the cases had some symptom and they were not demonstrable physiologically disturbance or disease. And therefore, I have worked myself on this area with the late Sir Zuberi, who was the stalwart of research. Nowadays, it is said that the gynecological, if I think Professor Taib is there, now the symptoms which are very common among gynecology is also very high related to unexplained symptom. So how we can say that this person may have? In our culture, if you see, go to the GP, there are many patients who comes with gas, gola, chakkar, badi, low blood pressure, neck pain, backache, धात, कुलिकोरिया, नाफ चढ़ गई है, और साथ में पता नहीं क्या गर्म दवाइयों का असर है, ठंडी दवाइयों का असर है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए. और उसके लिए ये अगर देखा जाए, ये मेरी एक प्रेजेंटेशन थी, the relationship of mind and body and among other system of the body are established since ancient time. Yet the present healthcare system is purely organ oriented, leading to unnatural dichotomies. Unnatural dichotomies ये कि कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो डायबिटीज से रिलेशनशिप हो सकती है या उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है. This has resulted in diversity of service in terms of minor specialties, super specialties, despite the fact that there is no clear boundaries between various organ or system. अगर आप किसी को पेट में दर्द है तो वो उसको गाना क्या अच्छा लगेगा, या अगर कोई जहन परेशान है तो उसको खाना क्या अच्छा लगेगा. तो ये इंटरलिंक्ड है. Various gray area has emerged as a result of this so-called modern medicine based on by and large anatomical orientation, hence specialties has been named accordingly. And this was anticipated very earlier by Socrates, that the fault of modern physician would be that he will separate the body from the soul. So keeping in mind this, I had a study. This study was carried out on more than 5,000 cases who came to our OPD. And here you can see that 82% of these cases had some physical problem, which was in the form of hypertension, obesity, or menopausal syndrome, or epilepsy. So therefore, we have to go holistic diagnostic approach. And this is published.
So there are various terminology which are used. Irritable bowel syndrome. मैं उनसे कह रहा था irritable bowel syndrome in ICD-10 chapter 5 or ICD-10 is no there, but it is very, the gastroenterologists are very fond of using this. Irritable bowel syndrome की उर्दू क्या है? चिचड़ी आंत. तो पेशेंट आते हैं मुझे IBS है. So therefore, the such term, chronic pelvic pain, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, and nowadays somatic symptom disorder, which can be classified the illness anxiety disorder. One is care seeking type, another is care avoiding type. और केयर सीकिंग टाइप ये होते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ के आते हैं, ECG कराते हैं, मेरा पल्स देखते हैं, और जो केयर अवॉइडिंग वाले होते हैं कहते हैं मैं ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराऊंगा, मैं वजन नहीं चेक कराऊंगा, ज्यादा ना आ जाए, शुगर नहीं चेक कराऊंगा, ये केयर अवॉइडिंग टाइप होते हैं. दी ICD-10 क्लास में कंफ्यूज ज्यादा नहीं कर ज्यादा, हर चीज यहाँ मौजूद है, लेकिन ICD-10 में इसका कोड है F45. Since our colleagues other than psychiatrists are not familiar with ICD-10, ICD-10 is the international classification of diseases in its 10th version, and 11th is coming. I am also the part of that ICD-11. So they have classified it in different way, and the DSM-5 DSM classification was in 1968 when DSM-2 came. It was called as a psychophysiological disorder, then psychological factor affecting physical condition, and then so on. Different version has come, but the ICD DSM-5 say that one thing which I like about the American classification, that they simplify things. For example, somnambulism, they call it sleepwalk. Nocturnal enuresis, because the kids are not comfortable to remember the Latin words and other things. So they, instead of saying nocturnal enuresis, they say bedwetting. So therefore, they have simplified. So this term is somatic symptom and related disorder. So the classification according to this is very different. It is available. So therefore, no need to discuss. But a lot of types has been described in this. The various forms which are present in the DSM-5 are somatization disorder, in which there are multiple systems are involved, and then the undifferentiated somatic symptom. The conversion disorder has also been, but in ICD-10 it is different from the somatoform disorder. Pain disorder, hypochondriasis, which means fear of having life-threatening illness or condition, or body dysmorphophobic disorder, which is preoccupation with real or imagined physical defect, and somatoform disorder, otherwise not classified. I think here you can see that for somatic symptom, the last component I want to say that typically more than 6 months this symptom should persist. This is according to DSM-5. So therefore, there will be conflict if you are diagnosed somebody and is not fulfilling this criteria. The insurance company will not let you treat her or him. So therefore, we have to be very careful while this thing. So if you look at this slide, if you don't have some diagnosis, I will for second opinion. You go for, the doctor is said that you go for second opinion, and he said I have already done. You are about 10%. So therefore, if you look at the coming years, we will have such patients. They will come with a lot of books or Google and try to find out their illnesses. So therefore, we should be prepared to tackle such patients. And why this is happening? Because if you look at this slide, ये छत है या फर्श है? कुछ लोगों को फर्श नजर आ रही है, कुछ को छत नजर आ रही है. उसकी इसी तरह से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर आर दीज इलनेस के वो साइकियाट्रिस्ट को अपने एंगल से देखेगा, मेडिकल वाला अपने एंगल से देखेगा. और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ये है कि एक कॉन्शियस अटेम्प्ट है और अनकॉन्शियस. दैट मींस कि एक वॉलंटरीली है, एक इनवॉलंटरीली है. जो इन नीचे वाली स्लाइड को इनवॉलंटरीली में क्या है? फिजिकल सिम्टम, सोमेटिक डिसऑर्डर, और फिर साथ साथ अगर प्री ऑक्यूपेशन विद सिम्टम, इसको कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. ऑन द अदर हैंड वॉलंटरीली जो करते हैं, जिसमें फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मिलिंगरिंग है, जिसमें ऑब्वियस गेन होता है. मिसाल के तौर पर हमारे पास पेशेंट आते हैं वहाँ जेल से,
तो वो अपने आप को बीमार साबित करने की कोशिश करते हैं। एक पेशेंट को बहुत ज्यादा वो कर रहा था, मैंने कहा आप जो हरकतें कर रहे हैं ऐसी हो ना जाए आपको ये बीमारी, तो जरा ख्याल रखें। अच्छा, how this is happening? If you remember the angel model of biopsychosocial model, that should be applied on all such conditions. There are some biological factors, psychological factors, and social factors which include poverty and so on. So if you look at this like somatic illness, how these psychiatric illness, psychosomatic illness, somatopsychic illness, and medical uncertainty, multiple illness are interlinked. So therefore, I am of the favor that holistic diagnostic approach should be applied, and especially I think the consultation liaison psychiatry, which is important to be established in Pakistan, and we have in Pakistan there is no qualified person. But I'll request Professor Tayyib at the end, and also Professor Abid, to help us to develop such facility. So how this phenomena is going on? First of all, there is triggering information. मिसाल के तौर पर उसको information मिली कि फलां बंदे को इधर खाना खा लिया था, अंडा खा लिया था, उसको हार्ट अटैक हो गया। उस information के उसको मैंने भी अंडा खाया था, वो apprehension शुरू होती है, बार बार चेक करेगा, increase bodily symptom देखेगा उसको, फिर उसके बाद में psychological arousal होगी which will lead to sympathetic overactivity, रिपीटेडली चेक करेगा। जैसे एक्ने की खातून होती है, बार बार चेक करेगी है नहीं है नहीं है, तो बार बार छेड़ से जो बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होती है, मुझे कार्सिनोमा ना हो, ये ना हो, जिसकी वजह से फिर जो है ये आइट्रोजेनिकली वो डॉक्टर भी गड़बड़ कर जाते हैं, खुद भी उसको डिस्टर्ब करता है, बार बार जो हाथों लगा के एक्ने को खराब कर देते हैं। Now the risk factor can be individual, family, environmental. There are certain personal experience in the physical illness, or that's why enhanced focus on physical sensation. यार उसको ये हुआ था, मुझे ये ना हो जाए। आज कोरोना वायरस के लिए उस दिन एक पेशेंट आई कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, फलान को ये हो गया था गले में। अब ठीक ठाक पेशेंट यानी कोयटा से कराची आई थी दिखाने के लिए, कि वो बार बार कहती क्या कोरोना बला है, मुझे ना हो गया हो। तो इस लिहाज से जो है इंडिविजुअल फैक्टर जो हसास लोग हैं, फैमिली फैक्टर जैसे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पेरेंटल सोमेटाइजेशन, और एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज लाइफ स्ट्रेस, जैसे स्कूल में या बुलिंग का शिकार हो, या स्टॉकिंग का शिकार हो, या एकेडमिक प्रेशर हो, इससे भी हो जाते हैं। Now the diagnostic tools, there are many diagnostic tools, which is one is a health anxiety inventory, the illness attitude scale, the Wesley index, and with जो मैंने इस्तेमाल की थी जब मैं 1994 में काम कर रहा था, तो ये बेविंगटन की बनी हुई जो है ब्रेडफोर्ड सोमेटिक इन्वेंट्री को तर्जुमा ऑलरेडी हो चुका था, लाहौर सोमेटिक इन्वेंट्री। आई अप्लाइड दैट ऑन माय पेशेंट, जिसमें जो मैं रिपीटेडली एंडोस्कोपियां कराते थे। एक पाकिस्तान हॉकी टीम का कौमी खिलाड़ी था, इसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसने 13 एंडोस्कोपी बाहर से कराई थी। जर्मनी टीम जाती जर्मनी कराता था, इंग्लैंड जाती इंग्लैंड। आखिर में सर जुबैरी मरूमा ने मेरे पास भेजा कि इतनी एंडोस्कोपी करा चुका है, आप जरा देखें। उसको मामूली सा ऑब्सेशन था और उसकी वजह से ये जो है बार बार कराता था। Now what are the barriers to treatment? First of all, believe that they may physical health problem, they don't want to be recognized as having depression or mental disorder. लोग उल्टी दस्त कहते हुए नहीं शर्माते और उदासी कहते हुए, खौफ कहते हुए, घबराहट कहते हुए शर्माते हैं। And fear of being stigmatized, कि मुझे लेबल लग जाएगा कि मैं नफ्सियाती हूँ, तो ये एक बैरियर है हमारे यहाँ। This is my own work which I want to share, जिसमें हमने ये किया था कि जो pattern of psychiatric morbidity in cases referred from GA clinic at JPMC. This my dissertation is available in College of Physician and Surgeon, and most of these patients had abdominal pain, disturbance of पेट, गोला है, they would say that पेट में गोला है, and abdominal fullness, constipation, gas, and most of these patients went to have faith healer, Hakim, homeopathic, and none of them went to psychiatrist. And lastly, they were referred by the gastroenterologist to our department, to me. So if you look at the explanation behind the phenomena, if you look at the body system is such a complex, if you look at this cognitive aspect,
the immunological aspect, and the cardiovascular system, the metabolic system, these are all interrelated, and that lead to depression or pain body and uneasiness. So therefore, when the patient comes, he may be not suffering from any disease, but he is at dis-ease. Dis-ease when he's not at ease. So therefore, we have to listen to him. तो वो हम बताएंगे किस तरह से इसका करना है. अच्छा, when to suspect psychosomatic disorder or somatoform disorder? When there are vague, multiple or prolonged symptoms, when there is minimal signs and inconclusive physical examination and investigation, multiple prescription and consultation. एक patient आया, 2 बोरी उसके पास तो prescription थी, or evidence of stress and psychological distress, associated psychiatric symptom, not responding to conventionally. उसको बजाय ये कि प्रोटॉन पंप इंडिकेटर दे दिया, उसको एंटासिड दे दी, रिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम उसका दिमाग में था. हम मरीज को अक्सर कहते हैं कि भाई आपका दिमाग में जो है प्लग में कचरा है तो साइलेंसर में धुआं आ रहा है. और उस पर मुझे याद आया कि पिछले साल हमें बुलाया गया था कि ये सुसाइड के मामले में सेनेट के चेयरमैन ने, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रोफेसर मुबशर मलिक साहब और इसके मौदत राना और सब थे, तो मैं हारून साहब थे. तो एक सेनेटर ने पूछा कि डॉक्टर साहब तो बड़े बड़े पाकिस्तान के लोग लाए हैं, ये मुझे बताएं कि ये मैदे का दिमाग का क्या ताल्लुक है. मैंने कहा इसका जवाब मैं दूंगा, क्यों, मैंने इसमें मेरा डिसर्टेशन है. तो उसको जब मैंने ये कहा कि अगर साइलेंसर के गाड़ी के साइलेंसर में धुआं आ रहा है और आप साइलेंसर के पीछे पड़े, हम कहते हैं ट्यूनिंग कराओ तो धुआं ठीक हो जाएगा, फिर हाँ समझ आ गया. तो इस तरीके से हम उसको समझाते हैं. अच्छा, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर? सबसे अहम है लिस्टिंग टू द पेशेंट, प्रॉपर हिस्ट्री. और हिस्ट्री में क्या, तो उससे पूछेंगे. मिसाल के तौर पर मरीज आता है पेट में तकलीफ है, मैं कहता हूँ क्या तकलीफ है, जलन है, मरोड़ है, दर्द है, क्या है, खट्टे डकारें आती हैं, खाने से ताल्लुक है नहीं है, डिटेल में पूछना चाहिए. उसकी वजह से वेंटिलेशन होती है. तो अगर हमारे इस कमरे में हब्स होता है तो हम खिड़की दरवाजा खोलते हैं, तो दिमाग की खिड़की मुंह है. इफ यू वर्बलाइज 6 बार आप किसी को लतीफा सुनाओ, फिर हाथ जोड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं सुनाओ, अब असर नहीं करेगा. तो सिमिलरली इफ वी लिसन टू हिम इन डिटेल, दैट विल इवेंचुअली वेंटिलेट द पर्सन, और वेंटिलेशन से उसका गुबार खत्म हो जाएगा और वो जो गैस गोला भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा. तो देयरफॉर फिर फिजिकल एग्जामिनेशन भी होनी चाहिए. ये नहीं है कि तो मैं मरीज को कहता हूँ आपका मैंने पेट भी देख लिया, मरोड़ ठीक है उसमें नहीं है, उसमें पेरिस्टाल्टिक में ठीक है, फेफड़ा भी देख लिया ये भी सही है, दिल भी ठीक है. हम थोड़े से टेस्ट कराते हैं आपकी तसल्ली के लिए, वरना मैं तो बीमारी समझ गया आपकी. तो फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है. वरना मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब ने दूरबीन तो लगाया नहीं मेरे ऊपर. एक मरीज ने कहा डॉक्टर साहब ने पल्स तो देखी नहीं मेरी, ये दूरबीन अच्छी तरह लगाओ मेरे इधर कंधे पे, है नहीं ये प्रॉब्लम. उनको इस किस्म के होते हैं. तो फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं. सेलेक्टिव लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए. हमारा गरीब मुल्क है, हमारे को MRI नहीं करा सकते. तो अब मैं ये आप लोगों से शेयर करूंगा कि ये एक पेशेंट मेरे पास आया और 2 मिनट की इसकी बात सुन, आवाज तेज करनी थी. नहीं इसको सीधा तो नहीं हो रहा है, आवाज आ रही, आवाज तो शुरू, आवाज नहीं आ रही है मेरा ख्याल है. एनीहाउ अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं बताता हूँ कि ये पेशेंट जो है आई, उसने कहा कि मैं घूम फिर रही हूँ. एक ने कहा आपको दिल की बीमारी है, दिल की पट्टी निकाले, आपको नहीं है, थायराइड का मसला है. थायराइड वाले ने कहा नहीं मैदे का मसला है, मैदे का नहीं है, फेफड़े का मसला. घूमती फिरती रही बेचारी, कह रही मैं गरीब खातून हूँ, मैं क्या करूँ. तो जब हमने उसको सुना डिटेल में, पता चला कि हल्का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था उसका इजहार ये जिस्म में कर रही थी. When psychological stress is converted and represented in the idioms of physical symptom, this is called somatization. इस दूसरा चला था, आगे करते नहीं हुआ, आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो वो दूसरा भी नहीं होगा. फिर किससे पूछें कि आवाज सुनाई दे रही है तो दूसरे का दूसरा चलो नहीं है तो कोई बात नहीं. ये दूसरी भी दिलचस्प केस थी. ये केस जो है मेरे पास एक बेटा अपने साथ ले आया और आप यकीन करें कि उसने, इस पे चलाएंगे कैसे, इसने कोई 50 बार मैदा उसका जो बाप बेटा था वो नाराज हो गया कि मम्मा चुप करें. मैंने कहा नहीं आप बाहर निकले, मैं इसकी सुनूंगा. ये बार बार मैदे के पीछे पड़ी हुई थी. वो 50 बार उसने कहा मैदे में जलन है, मैदे में जलन है.
इतनी बार उसने कहा कि उसका बेटा तंग आ गया था उससे। तो देयरफॉर ये बार बार मैं पीछे पड़ी हुई थी। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, ये आवाज बदकिस्मती से सुनाई नहीं दे रहा है, नेक्स्ट टाइम हम उसको कोई अच्छी तरह से करेंगे। अब अगला क्लिप है। अच्छा, तो देयरफॉर मैं ये कह रहा हूँ कि थेरेप्यूटिक अप्रोच में एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ पर्सन ही इज एट डिसईज, ही इज नॉट एट ईज। रैशनल रीअश्योरेंस ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको कहें हम मिल के ठीक करेंगे। आपकी लाइफस्टाइल, आप, मैं उसको कहता हूँ बीज मैंने लगाया, बीज के साथ जमीन भी हमार होनी चाहिए, उसके साथ मौसम भी ठीक होना चाहिए, अल्लाह का फजल होगा तो ठीक होगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे जिम्मे अच्छी बीज कलेक्शन थी। जमीन हमार होने से मुराद है कि आप वक्त पे सोएंगी, उठेंगी, वर्जिश करेंगी, इबादत करेंगी और ये दवाई खाएंगी, क्योंकि दवाई भी नहीं खाते, तो फिर ये सिलसिला ठीक होगा। तो रैशनल रीअश्योरेंस देना चाहिए। और फिर ये है कि मौसम से मुराद है कि इर्द गिर्द वाले आपको सपोर्ट करेंगे, बीवी, शौहर, फलां, ताकि ये मौसम के हिसाब से आपको ठीक करे, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये नहीं है कि मैंने बीज डाल दिया तो रिजल्ट आएगा। फिर इसके साथ ये है कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट हो, और फिर ये कि हम कहते हैं कि अगर अंडरलाइन कोई डिप्रेशन है या इलनेस है उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट टाइम है हमारे पास? हाँ, मैनेज ठीक चल रहे हैं थोड़ा। अच्छा, मैनेजमेंट में ये कि रीएश्योरेंस जो मैंने बताया वो रैशनल हो, एक्सप्लेनेशन हो कि किस तरह सिंपैथेटिक सिस्टम, वो जैसे एक मरीज को मैंने कहा कि आपका मैदा क्या है, कि मैं आपको अभी कहूँ कि आपने सुबह जो नाश्ता किया था उसमें छिपकली गिरी थी, कान सुनेगा, दिमाग को इतला मिलेगी, उसके बाद में उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है उसको जो है बताते हैं कि किस तरीके से ये लिंक है इसका, कि हमें इसी पे मेरी किताब आने वाली है, द वीपिंग गट, रोने वाला पेट, कि किस तरह जहनी परेशानी का इजहार पेट में, दिल में। अच्छा, इस पे भी एक सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि एक बंदा परेशान होता है तो उसको एक्नी होती है, दूसरे को अस्थमा होता है, तीसरे को हार्ट अटैक होता है, चौथे को पेट का मसला, तो इसकी क्या, किसी को नेक हो जाता है, किसी को बैक। इस पे एडलर ने कहा था, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन इन्फीरियोरिटी अकॉर्डिंग टू हिम, कि जो, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर जल्जला आएगा सारे मकान नहीं गिरेंगे, वो मकान गिरेंगे जो कमजोर होंगे। इसी तरह से हमारे जिस्म में कुछ ऑर्गन इन्फीरियर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन। तो जब हमारे ऊपर परेशानी होती है, तो अगर खातून है तो उसको एक्नी आएगी, किसी को मेंसेस प्रॉब्लम डिस्टर्ब होंगे, किसी को मैदे में तकलीफ होगी, तो अस्थमा होगा। तो ये इस तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर साइकोथेरेपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम साइकोएनालिटिकल अप्रोच तो और भी अच्छा है, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज एविडेंस बेस्ड, और इस पे हमने बायोफीडबैक भी बड़े इस्तेमाल किए हैं, अब तो खैर रिवाज कम हो गया। और हिप्नोथेरेपी, मसल रिलैक्सेशन एंड मेडिकेशन पे भी हम कहते हैं एंटी डिप्रेशन, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये जरूरी है। अच्छा, कुछ मरीज आते हैं वो कहते हैं नहीं मैं डॉक्टर साहब नफ्सियाती दवाई नहीं खाऊंगा, तो फिर हम उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये करें कि वो ग़िज़ाएँ खाएं जिसमें टायरामीन हो, जैसे केला, लोबिया, मुर्गी के कलेजी, पनीर, लस्सी, दूध, दही। फिर इसको कहते हैं कि स्लीप हाइजीन, वक्त पे सोएं, और इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी। वो कहते हैं मैं ठीक हूं तो जाऊं, मैं कहता हूँ नहीं जाओगे तो ठीक होगे। तो कहते हैं कैसे, मैंने कहा आप कहते हैं मुझे फल मिले तो पौधे उगाऊं, आप पौधे उगाएंगे तो फल मिलेंगे। आप एक गाड़ी की बैटरी डाउन है तो उसको चलाएंगे तो चार्ज होगी, तो आप पार्टियों में जाएंगे तो खुश होंगे, काम करेंगे। एक मरीज में पाया कि सर मुझे छुट्टी लिख दें, मैंने कहा अगर मैं आपकी जगह होता तो कभी छुट्टी नहीं करता, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज थेरेपी। उसूल रिज़्क़ के लाल इबादत भी है, इलाज भी है। गाड़ी चलेगी, यूज इट और लूज इट, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन एंड बॉडी इट विल बी लॉस्ट। तो इस लिहाज से हम जो कहते हैं काम करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये करें तो आपकी बीमारी खुद ही ठीक होगी। उससे एंडोर्फिन, एनकेफिलिन रिलीज होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, तो BDNF रिलीज होता है, विच इज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। एड्रेनलिन इस्तेमाल होता है जो एंजाइटी ठीक करता है। एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो पेन भगाते हैं, पेन में नहीं होगा। ये जो उसके खिलाड़ी होते हैं हॉकी के, जब वो गिरता है उसको चोट ही नहीं लगती, उसकी वजह ये है कि उसको इतना एंडोर्फिन रिलीज होता है। और एनकेफिलिन मूड को हशाश बशाश करते हैं, तो वो रिलीज होंगे तो इससे कम होगा। फिर हम कहते हैं डाइट जो है आप ऊपर और दिमाग के हिसाब से, नीचे दिल के हिसाब से, अब पूरे जिस्म के हिसाब से हमने ये बनाई है कि अब फूड एंड मूड, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब जो है इस डाइट का जो है साइकेट्री से रिलेटेड डाइट का एक उन्होंने चैप्टर खोला है। और दीज आर दी वेरियस थिंग कि पानी ज़्यादा पिए, वक्त पे सोएं, वर्जिश करें, इबादत करें, जो मैं नहीं चाहता कि ये पूरी लिस्ट है।
और अब ये है कि दवाई कौन सी दी जाए। देयर आर अराउंड 37 मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट। हम कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर को कि खुदा के लिए बेंजोडाइजेपिन ना दें, वो जहर है। आप दे वो कार्टिसोन देते हुए नहीं घबराते, एंटी डिप्रेसेंट देते हुए घबराते। हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो देयरफॉर ये 37 दवाइयां हैं, उसमें से जो है वो वाली दवाई दी जाए। इस पे मैं बताता हूँ कि साइकोसोमेटिक या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में कौन सी अच्छी हैं। ये देखा गया है कि ये वाली दवाइयां एमिट्रिप्टाइलिन सबसे ज्यादा, अगर आप देखें आखिरी में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी के हिसाब से है, जबकि आजकल डिलॉक्सिटीन बड़ी जो नीचे वाली है बड़ी, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसके लिए, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को ठीक करती है। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस? Prognosis based on the good doctor-patient relationship and willingness of the person कि combine effort के साथ इसको शिकस्त दें। Early detection of unexplained symptom, avoiding unnecessary investigation, treatment respond to anxiety and depression, and absence of personality disorder, वो difficult होते हैं। ये आखिरी है कि द सॉरो, ये मॉर्सले कौन था? मॉर्सले ने अपनी सारी जायदाद, जो मॉर्सले गाइडलाइन है, उसको वक्फ की। उसकी अल्फाज मुझे बड़े पसंद है। उन्होंने कहा था द सॉरोज विच फाइंड नो वेंट इन टीयर्स मेक अदर ऑर्गन वीक। यानी जहनी परेशानी का इजहार अगर मुंह से न किया जाए, वो जिस्म के दीगर अज़ा को रुला देता। और इन कंक्लूजन, सोमेटोफॉर्म और मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम और somatic symptom disorder are common, troublesome, but treatable. Let's identify, prevent, treat, and defeat them by all means and by all level. और हमने, अच्छा अब ये एक इसके अंदर एक कंपोनेंट है कि इसको उर्दू में क्या कहा जाए, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को उर्दू में क्या कहा जाए। तो ICD-10 जो कि हमारे दोस्त नईम ने जो है की है, वो क्या पूरा नाम क्या है उसका? फारूक नईम। हाँ, फारूक नईम साहब ने पूरी ICD-10 उर्दू में की है और 11 हमारे साथ करने वाले हैं हम उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन। उन्होंने इसको लिखा है बदनी हालत के अवारिस। इसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहा गया है, बदनी हालत के अवारिस। तो हमने भी उर्दू में कोशिश की है। हमने अपने वार्ड में ये बनाया कि जिस्मानी अलामात के साथ ज़ाहिर होने वाली नफ्सियाती बीमारी या बदनी हालत के अवारिस जो ICD-10 में मैंने किया है, उसमें हमने ये किया हुआ है। और हमने नीचे एक दिलचस्प बात बता दूं कि ये रिसर्च बेस्ड तो नहीं है, एविडेंस बेस्ड, लेकिन हमारे पास यहाँ डॉक्टर कुलसूम काम करती थी, उसको हमने इस पे लगाया कि कौन सा कलर किस बीमारी से रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि सफेद रंग की कलर जो है बीमारी की निशानी कर सकता है, और नीला और हरा रंग इलाज मुआवजे में मदद दे सकता है। तो मैं इसके साथ अपने स्टॉक का अख्तिताम करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, और कोशिश हमने की कि ये मुख्तसर से वक्त में पूरी चीज़ें बता दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड कॉन्संट्रेशन।